तो स्टेप 1 क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, सबसे पहले प्रोजेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है यू शुड नो, बस मैंने बता दिया, क्रिएट करके भी दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट एप्लीकेशन। उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे। ओके, एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप 3 क्या है, ऐड ऐप। ओके, हेलो एवरीवन। ओके, सो ये पार्ट 3 है। ओके, आज की वीडियो में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग लाइक वेब सर्वर। ओके, सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं जेंगो में। सेकंड वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। हाँ, अब थर्ड वीडियो में हम देखेंगे क्या, जेंगो सर्वर किस तरह से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट जेंगो सर्वर। एवरीवन नोज व्हेन वी स्टार्ट जेंगो सर्वर, सो वी राइट py manage.py run server. Okay, whenever we run this command, our server deployment server started. Okay, so if you are not getting this, so what I'm talking about, for example, see, I created this project in Django YouTube folder. I created one folder. The folder name is first project. Okay, inside the first project we have two things. First is projects, and second one application test app. Okay, if we go inside the project, so we have project related files, and if we go inside the application, so we have application related file. Okay, so when you go to the project folder, so most important file is settings.py and urls.py. Okay, so this is most important file as a beginner level. Okay, initial level पर ये दोनों फाइल है important है। एंड एप्लीकेशन के अंदर व्यू, ओके, views.py एंड models.py, ये फाइल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, इनिशियल लेवल पर व्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम इसी के बारे में समझेंगे, इसी में काम करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, हाउ यू विल ओपन दिस प्रोजेक्ट in VS Code. If you are using VS Code IDE, so here you will write simply CMD. When you write here CMD, so this folder location, what is the folder location? See D drive, D drive के अंदर Django U2 फोल्डर, एंड Django U2 फोल्डर के अंदर है हम फर्स्ट फोल्डर में। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्टली, अगर हम यहाँ पर CMD डायरेक्टली टाइप कर देंगे लाइक दिस, तो ऑटोमेटिकली ये लोकेशन CMD में ओपन हो जाएगी। सी D drive Django U2 first project. Okay, so we are on our project location. So here I will write code space dot. Code space dot is the shortcut way to open VS Code. Okay, so when I click enter, VS Code में हमारा project open हो जाएगा. We already created this project. Okay, we already created this application. Okay, we created this function. Okay, so इस project को run कैसे करेंगे, अब project को run कैसे करेंगे? Okay, if you drag like this from here, a terminal will open. See here, terminal is open. Okay, this is what PowerShell. If you can want to change, you can change here like command prompt, right? And from here और here, यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को कमांड प्रॉम्प्ट से, और यहाँ से VS कोड में से भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कैसे रन करेंगे, तो रन करने के लिए कमांड होती है py manage.py run server। ओके, manage.py फाइल हमारा जो है ना, वो ये फाइल है। हम क्या कर रहे हैं, py मीन्स पाइथन, manage.py। ओके, manage.py को रन कर रहे हैं, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हैं, रन सर्वर। ओके, वी विल सी इन डिटेल व्हेन यू प्रेस एंटर, so it will give you, okay, it will give you the URL. When you click here, when you click here, your server is started. It is showing page is not found because we have this route like msg. When you write here /msg, so it will come. Okay, hello world, how are you? We created already this. We will discuss this again, but before discussing this, we have to understand some important point. Like this command is to run web server. Okay, like run, we can say run development server. Okay, this is the command. And now we will understand the role of web सर्वर। ओके, सो वेब सर्वर का एक्चुअल में रोल क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, तो अगर जेंगो सीख रहे हैं हम लोग, तो उसको डेप्थ में सीखना इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट लाइक यू आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, यू आर क्रिएटिंग एप्लीकेशन, बट थ्योरेटिकली यू डोंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ वेब सर्वर and what is the mean of manage.py files. If you don't know, then what is the mean of learning Django? You should know each and every point regarding Django. Okay, so we are learning role of web server. So what is the role of web server?
So we can say web server will provide environment to run web our web application. Okay, so we already created our application now. What is our application? Test tab is our application. So whenever we will create Django project, so we will create two things. One is project and second one is application. First we will create the project and then we create the application, right? So web server क्या करता है? Web server will provide environment. Okay, web server provide environment to run our web application. Okay, because we are executing this application on browser, so means this is what web application, right? Second point is web server is responsible to receive the request and form request to the corresponding web component based on URL data and to provide response to the end user. Okay, so ये spelling mistake हो गया. Form, this one is correct and corresponding to this spelling is correct. So what is the mean of this point? So web server is responsible to receive the request. So web server request कैसे receive करते हैं? For example, if I delete this and if I run the server, so user can give URL pattern like MSG, MSG2 and MSG3. So if I'm writing here, for example, MSG2. So what I am doing here, web server is responsible to receive the request. So we are sending the request. We are sending the request to the web server. See, our web server is running. Our web server is running. Okay, on this particular IP address. Okay, so our web server is running. When we press enter by typing this, जब हमने ये टाइप कर दिया MSG2, तो हम इसको प्रेस करेंगे रन बटन, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी. जब ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो क्या हो गया? फॉर एग्जांपल व्हेन आई हिट एंटर, तो क्या हुआ? ये यूआरएल था ना MSG2, ये कहाँ पर गए? ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट तक फाइल का एड्रेस है. प्रोजेक्ट का मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, फॉर एग्जांपल, ओके वेट, फॉर एग्जांपल व्हेन वी हिट एंटर, सो क्या हुआ? हमारा प्रोजेक्ट इस लोकेशन पर आ गया. यानी प्रेस एंटर तो इस लोकेशन पे आ गए. और उसके बाद क्या हुआ? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूआरएल्स करके एक फाइल बना हुआ है. यूआरएल्स करके फाइल बना हुआ है. अगर अगर हमारे पास MSG2 करके यूआरएल है, मीन सी वी हैव इनसाइड द प्रोजेक्ट वी हैव urls.py. अगर urls.py के अंदर MSG2 है तो क्या होगा? तो एरर नहीं होगा, एरर नहीं शो करेगा वेब सर्वर पर. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यूआरएल्स हमने जो बनाए यूआरएल्स बनाए हैं, इसमें MSG है, MSG2 है, MSG3 है, MSG4 नहीं है. अगर MSG4 इसमें हम टाइप करेंगे इंस्टेड ऑफ MSG2, सो क्या होगा? एरर आएगा. व्हाट इज इट इज सेइंग? पेज नॉट फाउंड. ओके ओके, फॉर एग्जांपल, like instead of writing MSG, if I'm giving here nothing, so what will happen if I if I'm not giving any route, means nothing I'm giving, so what will happen? Automatically it will call which file? It will automatically call views.demo. Why? Because when user not giving any URL, okay, URL, so it will directly call demo. अब ये demo क्या है? अच्छा, views के अंदर, views फाइल के अंदर हमने क्या बनाया है? एक demo करके फंक्शन बनाया है. तो देखो views फाइल में, ये अपना views फाइल है, इसके अंदर demo करके बनाया है. और ये demo फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू. सो ये रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू ऑटोमेटिकली. सो मैं क्या बोल रहा था? हम लोग किस बारे में डिस्कशन कर रहे थे? Web server is responsible to receive the request and form request to the corresponding web component based on URL pattern and to provide response to the end user. I hope you are getting now. Okay. Okay. Let me change the color. Okay. With different color, I will write next point. Django framework
responsible to provide development server. Even Django framework provides one inbuilt database. Okay, what is the database name? SQLite, SQLite 3. Okay, so क्या होता है? See, Django framework is responsible to provide development server. Okay, development server. When we install Django, so automatically development server come. When we write py manage.py. Okay, so means what we are doing? Run server. We write here. See, what we write? Py manage.py run server. So this server comes with Django itself. Okay, and one inbuilt database SQLite 3. See, when you create the Django project, okay, when you create the Django project, so you will get a database. What is the database? SQLite 3. So it will come with Django. Whenever we create the project in Django, this database is default. Although we can change the database, but this is the default, right? ठीक है. अभी एक नोट करने वाला पॉइंट और है. Okay, you can note this point, right? Let me change the color. कलर चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होप. सो अपना डॉक्यूमेंटेशन है कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं, राइट? लेट मी टेक दिस कलर. Once we started server, a special okay, so ये क्या है? Once we started server, a special database related files will be generated in our project folder structure. Okay, so whenever we create the project and when we run the server, automatically database related file will create. Okay, so okay, wait. So I will tell you again like how to create the project. Okay, if you don't know, like if you forgot or if you're getting some error, we will create project again. Okay, let me delete the project. Okay, so let me remove this. तो मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है. आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो. Okay, अगेन एंड अगेन देखोगे तो इजी आपके लिए बनाना. इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं. अच्छा देखो किस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है. फॉर एग्जाम्पल इसको भी क्लोज कर देते हैं. ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर में आया. कंप्यूटर में मेरे पास टू ड्राइव्स हैं, एक सी ड्राइव एंड डी ड्राइव. मैं डी ड्राइव के अंदर गया. ठीक है, अब डी ड्राइव के अंदर फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ फोल्डर. इन डी ड्राइव यू कैन क्रिएट अ फोल्डर. सबको पता है फोल्डर कैसे बनाते हैं. ओके, तो न्यू पे गए, एक फोल्डर बना लिया. फोल्डर का नाम कुछ भी दे दिया, लाइक माई प्रोजेक्ट्स. माई प्रोजेक्ट्स. ओके, प्रोजेक्ट्स एस. ठीक है, एक फोल्डर बन गया माई प्रोजेक्ट्स. गो इनसाइड द फोल्डर. तो अब हम फोल्डर के अंदर है. ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमने फोल्डर बना लिया, हम फोल्डर के अंदर आ गए. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ, डी कॉलन स्लैश माई प्रोजेक्ट क्लिक करा रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे सीएमडी. व्हेन यू टाइप हियर सीएमडी, तो क्या होगा? सीएमडी हमारा ओपन हो जाएगा. अगर ये ओपन नहीं हो रहा है तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली टाइप हियर डी. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट ओपनिंग, सपोज इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो सीएमडी हम लोग ओपन कर लेंगे इस तरह से सर्च करके सीएमडी. देन वी आर इन सी ड्राइव, सो आई विल चेंज द लोकेशन. आई विल चेंज द लोकेशन. हाउ आई विल चेंज? आई विल राइट हियर डी कॉलम. सो आई एम इन डी ड्राइव. अब डी ड्राइव के अंदर मेरे पास फोल्डर कौन कौन से हैं देखने के लिए मैं टाइप करूंगा डी आई आर. सो मेरे पास है जेंगो यूट्यूब फोल्डर, फुल स्टैक पाइथन फोल्डर एंड माई प्रोजेक्ट. सो आई विल गो इनसाइड द माई प्रोजेक्ट. तो माई प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम क्या लिखेंगे? सी डी माई प्रोजेक्ट. ओके, व्हेन यू प्रेस टैब सो इट विल ऑटोमेटिकली कंप्लीट. अगर टैब दबा देंगे ना हम, फॉर एग्जांपल मैंने माई प्रो लिखा और मैंने टैब दबा दिया तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट कर देगा. तो अब हम कहाँ आ गए? माई प्रोजेक्ट के अंदर आ गए. ओके, या तो ऐसे आ जाओ या फिर सीधे यहाँ पर सीएमडी लिखो और आ जाओ. डी ड्राइव माई प्रोजेक्ट. अब हम इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? जेंगो में हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे? अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको वीएस कोड में और खोल लेते हैं. सो आई विल राइट हियर कोड डॉट. तो अभी तक मेरे पास कोई फाइल वगैरह नहीं है. ठीक है, अभी देखो मैं माई प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर हूँ और मेरे पास कोई फाइल नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा जेंगो
Django admin start project. Okay, what's the project name? What is the project name? Any project name you can give. Okay, like we can say one is our project name. Okay, so our project is created. Our project is created means our project, a folder is created. What is the folder name? One. Okay, see here, one folder is created. This is our project folder, and inside this folder we have some files. Okay, projects related file inside the one folder. Okay, and this what we have, manage.py. Okay, we can say this is a server file. Okay, with the help of this we will run the server manage.py. Okay, now what we will do, we created our project. So when we create the project, we also create application. A project can contain multiple application. Remember this point, a project can contain multiple application. लेकिन हम multiple application नहीं बनाएंगे, हम simply first application बनाएंगे. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, वन वन प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया ना, हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन होते हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर बनता है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे. cd, व्हाट इज द फोल्डर नेम, व्हाट इज प्रोजेक्ट नेम, वन. ओके, हियर वी विल क्रिएट हियर वी विल क्रिएट आवर एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे py manage.py start app. व्हाट इज द ऐप नेम, वी कैन से टेस्ट ऐप. हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया. ओके, ठीक है, एप्लीकेशन क्रिएट हो गया. अब आप ये मत बोलना कि मतलब ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. नहीं, इसमें जितनी बार आप रिपीट रिपीट स्टेप्स देखोगे ना, उतना ज्यादा क्लियर होता रहेगा. तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, एंड डोंट बॉदर अबाउट द टाइम. टाइम तो लगेगा, देखो कुछ भी चीज सीखना है उसमें टाइम तो देना पड़ेगा. बिना टाइम दिए कोई चीज नहीं आ जाता. ठीक है, रील देखकर और शॉर्ट वीडियो देख के नई चीजें उतना जहन में बैठ पाती हैं. कुछ पल के लिए तो समझ में आ जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट तक वो रहेगा, एक दिन तक रहेगा, 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा. लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है कोई चीज को, ठीक है, अगर जेंगो पर काम करना है, अच्छे से प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, डेवलप करना है, ठीक है, इसको अपना स्किल्स बनाना है, टाइम तो देना पड़ेगा. ठीक. सो हियर वी हैव टू फोल्डर, वन इज प्रोजेक्ट फोल्डर एंड देन वी हैव अवर एप्लीकेशन फोल्डर. अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रन करने के लिए कमांड होती है py manage.py रन सर्वर. अच्छा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस फाइल आ जाएगी. जैसे कि हमने इस पॉइंट में मेंशन करा है, वंस वी स्टार्टेड सर्वर अ स्पेशल डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स विल बी जनरेटेड इन आवर प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर. ओके, डेटाबेस रिलेटेड फाइल नहीं है, SQLite नहीं है अभी अपने पास, तो अभी हम इसको रन करेंगे. py manage.py run server. When I press enter, okay, so our server location means server IP address is this, and check whether the file is there or not. See, this is a database related file. This is what database, right? And this is migration. So this is what database related files we got when we run the server. Okay. So what is our project location? When we copy this, when we will copy this URL, select this and copy the control C for copy, or you can press directly here. You can directly click here. So our server is running properly. Okay. Now what we can do, we can create URL. Okay. Now we can create URL. Okay. So before creating URL, first क्या करेंगे, हम हमने एप्लीकेशन बना लिया और प्रोजेक्ट बना लिया, बट अवर प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट है ना, वो नहीं पहचानते इस एप्लीकेशन को. तो इसमें कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स डॉट पी के अंदर जाएंगे. यहाँ पर हमें सर्च करना होगा इंस्टॉल ऐप ना लेकर. इंस्टॉल ऐप पर क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में जाके सिंगल कोटेशन देके हम अपनी एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे, टेस्ट ऐप. सिंपली टेस्ट ऐप लिख लिया तो मीन्स हमारी जो एप्लीकेशन है ये प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज कर लेगा. हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वन, हमारी एप्लीकेशन का नाम है टेस्ट ऐप. राइट. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यूआरएल बनाएंगे. तो इसमें तो ऑलरेडी एक एडमिन करके यूआरएल बना हुआ है, बट हम एक अलग अपना यूआरएल बनाएंगे, पाथ. ओके, फॉर एग्जांपल माई माई वेब करके बना रहा हूँ. ठीक है, माई वेब करके. सो माई वेब करके जो मैंने ये बनाया है ना, तो ये मैंने इसलिए बनाया है क्या, व्हेन आवर सर्वर इज रनिंग, सो हियर यूजर विल टाइप माई वेब. तो जब माई वेब डालकर टाइप करके वो एंटर करेगा तो रिक्वेस्ट कहाँ पर पहुंचेगी, रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी माई वेब. ओके, हम क्या करेंगे, तो जब यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी माई वेब पर, तो हम क्या करेंगे, ये जो
माई वेब करके है, ये हमारी रिक्वेस्ट को कहाँ ढूंढेगा, व्यूज डॉट, एक फंक्शन हम बना लेंगे, इसका नाम है डेमो। ओके, थोड़ा सा नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है, जरा थोड़ा सा बी फोकस्ड हियर। बट व्हाट इज व्यूज एंड व्हाट इज डेमो, वी डोंट नो। सो व्यूज जो फाइल है ना, व्यूज करके फाइल है, वो टेस्ट ऐप के अंदर अवेलेबल है। व्हेन यू गो टू द टेस्ट ऐप, सो यू विल सी views.py। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइल हियर, व्यूज। क्योंकि व्यूज फाइल के अंदर हम अपना मेथड डिफाइन करेंगे, तो हमें पहले इसको बताना पड़ेगा, urls.py फाइल को हमें बताना पड़ेगा कि व्यूज फाइल टेस्ट ऐप के अंदर अवेलेबल है। सो आई विल राइट हियर फ्रॉम व्हाट इज द ऐप नेम, टेस्ट ऐप, import what, views। Okay, import views file, we don't need to write the extension, okay, .py don't need to write। तो अभी हमें ये पता लग गया माई व्यूज क्या है, ठीक है, सॉरी माई वेब क्या है, माई वेब, क्योंकि जब यूजर एंटर करेगा माई वेब, ओके हियर व्हेन प्रोजेक्ट इज रनिंग, माई वेब जो एंटर करके एंटर प्रेस करेगा यूजर, तो रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी। हम कह रहे हैं माई वेब अगर रिक्वेस्ट आए, अगर एडमिन रिक्वेस्ट आए तो ये इस लोकेशन पर जाओ, अगर माई वेब रिक्वेस्ट आए तो व्यूज पर जाके डेमो पर जाओ। तो व्यूज कहाँ पर है, व्यूज है टेस्ट ऐप के अंदर। सो सी टेस्ट, टेस्ट ऐप इज देयर, टेस्ट ऐप के अंदर व्यूज है या नहीं है, व्यूज फाइल है, पर टेस्ट ऐप के अंदर डेमो है क्या, सी हम कह रहे हैं माई वेब पर जाकर व्यू व्यूज पर जाओ, व्यूज के अंदर एक डेमो फंक्शन होगा, बट व्यूज के अंदर डेमो फंक्शन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम खुद बनाएंगे। सो हियर आई विल राइट हियर, यहाँ पाइथन कोड लिखा जाता है सिंपली, जैसे पाइथन में फंक्शन बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे, हमारे फंक्शन का नाम होगा डेमो। हियर हम वी विल राइट रिक्वेस्ट, एनीथिंग यू कैन राइट, इवन यू कैन राइट आर, ओके, एज अ आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, फॉर एग्जांपल this function I'm writing here, what s equals to h, okay, h1 tag hello world, right? So now what I will do, I will write here return। so मैं डायरेक्टली s को रिटर्न नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग फाइल, बिकॉज इट इज इन सिंगल कोड। ओके, इनसाइड द सिंगल कोड वी हैव html टैग। सो जो हमारे ब्राउजर समझते हैं, ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है HTML लैंग्वेज, तो अपना ब्राउजर HTTP रिस्पॉन्स को समझता है, HTTP लैंग्वेज को समझता है, तो HTTP लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है यूजर एंड वेब सर्वर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम django डॉट http import http response। तो हम इस पे क्या रिटर्न करेंगे, http रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, http रिस्पॉन्स। अब http रिस्पॉन्स में हम क्या रिटर्न करेंगे, s रिटर्न करेंगे। s मींस यू आर रिटर्निंग, s मींस यू आर रिटर्निंग दिस हेलो वर्ल्ड। तो अब देखो फिर से समझो, जब हमने ये फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक आई क्लोज दिस फाइल आई क्लोज ऑल द फाइल। ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम let me clear this, when you created this, so first you will start your server, py manage.py run server। okay, views is not defined, let me save this, let me run again, cls py manage.py run server। when you here, when you press enter, you will get url for your project। okay, so ये url हमें मिल गया, तो इस url पे क्लिक कर हम जा सकते हैं अपने सर्वर पे। तो पेज नॉट फाउंड एरर दे रहा है कि हमारे पास दो पेज हैं, एक तो एडमिन पेज है, एक वेब माई वेब करके आ रहा है। तो माई वेब करके क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बनाया है, इसको हमने बनाया, देखो माई वेब, ठीक है। व्हेन यूजर टाइप हियर, व्हेन यूजर टाइप हियर इन यूआरएल लाइक व्हाट, माई वेब, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर फैच करेगा, माई वेब नाम से कुछ है, तो माई वेब नाम से एक एंड पॉइंट बना हुआ है, राउट बना हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, माई वेब करके अगर रिक्वेस्ट आए तो उसको रिस्पॉन्स कहाँ से दो, व्यूज के अंदर जाके, डेमो के अंदर। अच्छा, जो व्यूज फाइल है, अभी हम कहाँ पर है, अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर हम कहाँ पर हैं, यूआरएल्स में, ठीक है। तो यूआरएल के इस अब अपने प्रोजेक्ट्स में कोई व्यूज नाम से फाइल है, नहीं है, कोई फाइल नहीं है। लेकिन व्यूज नाम से कोई फाइल नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा हमारा urls.py। हम कह रहे हैं कि जो हमारी व्यूज फाइल है वो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, बट टेस्ट ऐप के अंदर है, सी views.py। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम टेस्ट ऐप से हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, व्यूज। ओके, सो अब रिक्वेस्ट व्यूज पे जाने के बाद
डेमो पर जाएगी। व्यूज के अंदर से डेमो फंक्शन को कॉल कर दूं, तो व्यूज के अंदर गए हम। अब यहाँ पर चेक होगा डेमो फंक्शन अवेलेबल है या नहीं। यस, डेमो फंक्शन अवेलेबल है, तो क्या रिटर्न कर दो, हेलो वर्ड रिटर्न कर दो। हेलो वर्ड रिटर्न कर दो। और रिटर्न करने का प्रोसीजर क्या होगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू हम रिटर्न करेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग एचटीएमएल टैग, नॉट ओनली एचटीएमएल टैग, बिकॉज योर ब्राउजर अंडरस्टैंड एचटीटीपी response. That's why we are returning this response as a http response. Okay, so you have to write here from django.http import http response. Okay, so when I press enter, so we are getting responses hello world, right? अगर आपका ये प्रॉपरली रन हो रहा है, अगर आपका इस तरह से आउटपुट आ रहा है आपका, तो मीन्स ये है कि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। ठीक है, तो छोटा छोटा ट्राई करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास एक फोल्डर है, वन फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फोल्डर है, एक फोल्डर है ओके वन, और दूसरा है टेस्ट। दिस इज द प्रोजेक्ट रिलेटेड फोल्ड। ओके, this folder contain project related files like this. Okay, and this test app contain application related file. Okay, so we will learn about these files like init, what is admin, what is apps, models, okay, test.py, views.py. Okay, क्योंकि हमें theoretical भी पता होना चाहिए। It is not like your server is running or your response is coming. It is not like learning Django. We have to know each and everything about the Django. So we will learn this. Let me take some other color. Okay, so here I will explain the files. First file is underscore underscore init underscore underscore py, right? So what is this file? Okay, what is the mean of this file? So it is a blank Python script. Okay, it is what? A blank Python script. Okay, see, when you open your project, when you click on init.py, so it is a blank Python file. It is not a magic function or it is not a constructor, because parenthesis is not there. This is .py file. It means this is Python file. Okay, and this one is a blank script file, you can say, right? And the second one is admin.py. Admin.py, right? Change the color. Okay, what is admin.py? See here in our project we have admin.py file. Okay, this one admin.py. So what is the mean of this file? We can see, we can register our models in this file. Django will use these models with Django's admin interface. Okay. I don't know you are watching this video from here or not. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अपने नोट्स बनाओ, ठीक है? खाली इसको ऐसी मूवी की तरह नहीं देखो। नोट्स, एक नोटबुक लो, उस पर लिखो। ओके, फाइल्स के नाम लिखो, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है इस वीडियो से सब लिखो, समराइज करके लिखो। जो लैंग्वेज तुम्हें आता है उस लैंग्वेज में लिखो, लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, whatever language you know, write your points, otherwise you will forget everything. ओके, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उस थॉट्स के बीच में ये खो जाएगा कहीं, ये नॉलेज। ओके, तो whatever language you know, write in your language, right? This point. So we can register our model. Model means you can say like database related file, database table file, you can say. Django will use this model with Django admins interface. Okay, so when we open admin panel, because Django also provide admin panel, here for example, why it is giving error? Okay, we will resolve this error, don't worry. Okay, because we didn't create a super user. When we create the super user, then it will not come. Okay, then only we can open the admin panel. Okay, that's why this error is coming. We will create an upcoming lecture admin panel super user we will create. Okay, so we will discuss this file later. Just write the notes. Okay, so that time you can recall this. Okay, after that
we have another file apps.py. Okay, we have apps.py file, apps.py, right? So what is this apps.py? First see, we have this apps.py. Okay, what's the mean of this file? In this file, we have to specify applications, specific configurations, right? In this file, we specify application related configuration, right? Okay. After that, we have models.py. Okay, we have models.py. So what is this models.py? In this file, we have to store applications data model. Okay, so in this application, what we do is we store application related data models. Okay. Now we have test.tests.py. Okay, small t, small m, okay, test.py. See, test.py is there or not? This is the tests.py file. Okay, so we will write test.py. So in this file, we have to specify test functions to test our code. Right? Okay. क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएटेड योर प्रोजेक्ट, तो अगर एक बार प्रोजेक्ट बन गया आपका तो उसको टेस्ट करोगे आप, तो टेस्ट करने के लिए टेस्ट डॉट पी वाई फाइल में हम क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट अवर एप्लीकेशन, राइट? Wait. Now six point is views.py. It is a small v. So what is the purpose of views.py? Okay, so what we do in views.py, in this, so in this file, we have to save functions that handles request and return. Okay, so what we do, so what is the mean of views.py? In this file, we have to save functions that handles request and return the required response. तो हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल views.py है, तो इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया. जनरली views.py में हम फंक्शन बनाते हैं और रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं. तो डेमो फंक्शन के पास रिक्वेस्ट आएगी. डेमो फंक्शन कहाँ अवेलेबल है? views.py में. डेमो फंक्शन, रिमेंबर दिस पॉइंट, डेमो फंक्शन इज अवेलेबल इन views.py. तो डेमो फंक्शन पे जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो डेमो फंक्शन विल रिटर्न द रिस्पॉन्स. इट इज रिटर्निंग व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स? एचटीटीपी रिस्पॉन्स. इट इज रिटर्निंग एचटीटीपी रिस्पॉन्स. अब रिक्वेस्ट कहां से आएगी? रिक्वेस्ट आने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कोई व्हाट्स द नेम, like what is our endpoint? We have my web. Okay, so if some user will type my web, तो when he pressed enter, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां पर गई? देखो समझो, अगेन समझो. ये रिक्वेस्ट सबसे पहले गई यूआरएल्स पे. यूआरएल्स पे जाने के बाद माई वेब है या नहीं ये वेरीफाइड होगा. अगर ये है तो व्यूज की फाइल के अंदर डेमो फंक्शन से रिस्पॉन्स मांग रहे हैं. तो ये रिक्वेस्ट कहां पर जा रही है? व्यूज के पास जा रही है. व्यूज में से अब चेक करेंगे डेमो फंक्शन है या नहीं. डेमो फंक्शन है तो डेमो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है. व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स? एचटीटीपी रिस्पॉन्स. सो रिस्पॉन्स क्या है? हेलो वर्ल्ड. इट इज रिटर्निंग. सो इट्स कमिंग हेलो वर्ल्ड हियर. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर. Now we have another file. Okay.
we have another file which is, what is the file name? Migrations. Okay, we have migration file. So इस फाइल का क्या मतलब है, क्या यूज है? एक्चुअली में we have not the migration file. See, we don't have migration file, we have migration folder. Okay, we have migration folder. So हमारे पास क्या है? माइग्रेशन फोल्डर. और माइग्रेशन फोल्डर का क्या यूज है, क्या मतलब है? Let's understand. So we can say this directory stores database specific information related to models. Okay. This directory store database specific information related to models. तो अभी इसके बारे में हमें जानने की इतना जरूरत नहीं है, बस हमें ये मोटा मोटा पता होना चाहिए इस फाइल, इस फोल्डर के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, कुछ फाइलें होती हैं जो कि डेटाबेस से रिलेटेड होती हैं. ओके. तो हमने ये एप्लीकेशंस, whenever we create the application, so these are the important files like init.py, admin apps.py, models.py, test.py, views.py, migrations.py. Okay. And one more important point, note. Okay, what is the notes? Commonly the most commonly used files in every project are views.py and models.py. तो views.py, views.py के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग? फंक्शन बनाते हैं, पाइथन कोड लिखते हैं जिसमें कि फंक्शंस बनाते हैं, जो फंक्शंस कुछ रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं ना फंक्शन, तो वो हम फंक्शन इसमें बनाते हैं. एंड मॉडल्स.py फाइल में हम क्या करते हैं? इसमें डेटाबेस रिलेटेड चीजें लिखते हैं. ओके, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? Okay, for example, what are the activity in order to create the application? So remember this point also, so it will definitely help you in order to create the application. So activities required for applications. So what are the activities required for application? Okay, now ध्यान से थोड़ा सा समझो उस पॉइंट को. Okay. Let me take what color? Let me take this color. So activity one. Okay, what's the first activity? Okay, add our application in settings.py, right? So that Django aware about our application. ओके. सो जेंगो को तभी पता लगेगा अपने एप्लीकेशन के बारे में जब हम उसको settings.py में क्या करेंगे? रजिस्टर कर देंगे. अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो नहीं पता लगेगा, प्रोजेक्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. ओके. एंड देन व्हेन इन settings.py में कहा जाते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव settings.py. ओके, settings.py वी हैव स्मॉल s. तो settings.py के अंदर क्या होता है? हमारे पास एक इंस्टॉल्ड एप्स करके होता है कि यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बट हमें सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना होता है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज आवर एप्लीकेशन? टेस्ट एप, जो कि हमने रजिस्टर भी किया है, आपको पता भी होगा. फॉर एग्जांपल सी हियर. तो फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर settings.py है. यहाँ पर क्या है? इंस्टॉल्ड ऐप. ओके, इंस्टॉल्ड ऐप में हमने क्या करा? अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करा, मैंडेटरी स्टेप, राइट? अब इसके बाद एक्टिविटी 2 क्या होती है? दिस इज द एक्टिविटी 1. लेट मी चेंज द बैकग्राउंड. ब्लैक. Let me take white color. Okay, white is not coming because I didn't select it. Now it's coming.
activity 1. Now I will write the activity 2. Activity 2. Activity 2. So मुझे ये फॉर्मेट कॉपी करना है. I will write here. Click here. Activity 2. What is the activity 2? Okay, activity 2 is okay. So here what we will do, create a view function for our application in views.py. Okay, views.py is responsible to prepare required response to the end user. For example, view contains business. Okay, view file contain what? Business logic. बिजनेस लॉजिक लाइक जो भी हमने फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा है तो वो लॉजिक कहाँ रिटर्न होगा, लाइक अपनी वेबसाइट पे रिटर्न होगा. ठीक है, तो व्यूज डॉट पी वाई के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं. और ये तो क्योंकि हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एप्लीकेशन समझने के लिए एप्लीकेशन कैसे बनाते प्रोजेक्ट के होते हैं, हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है डेमो नाम से, और हम सिंपली क्या रिटर्न कर रहे हैं, लाइक एक सिंपल मैसेज रिटर्न कर रहे हैं. दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट. ओके, अच्छा व्यूज के अंदर हम दो चीजें बना सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूज. ओके, तो फर्स्ट वन क्या है, फंक्शन बेस्ड व्यू. ओके, सेकंड वन है बेस्ड व्यू क्लास बेस्ड व्यूज. सो रिमेंबर दिस थिंग. तो हम इसके अंदर फंक्शंस भी बना सकते हैं और एक क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद एक नोट और याद कर लीजिए. ठीक, तो लेक्चर लंबा हो रहा है आई थिंक. मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा लेक्चर हो जा रहा है, बट कोई नहीं. लाइक कोई चीज सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ता है यार. बिना टाइम दिए नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं आएगा. Nothing is easy. There is not a smart way and nothing. You have to do the lots of effort in order to learn the things. If you don't want to learn, and if you think like there is a easy way, then you can go through with that easy way. मतलब मुझे तो यही लगता है कि कोई चीज सीखने के लिए डेप्थ में सीखने के लिए टाइम देना इंपॉर्टेंट है. Each view will be specified as one function in views.py. Okay. Second point is in the example. For example, here what we write here demo. We write here demo. So demo is what? Demo is a function. Okay. So demo is what? In views.py, each function or method. Okay. Each function or method is like a one view. ओके, सो अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं डेमो करके एक फंक्शन बना रहे हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमने डेमो फंक्शन बनाया. वी विल से दिस इज व्हाट, अ व्यू. वी क्रिएटेड वन व्यू इन जेंगो, लाइक jargons. We will say we created one view. Okay, so we can create so many views, means so many functions we can create, right? And one more important thing, each view will take at least one argument. Okay, one argument. What is that argument? Argument like demo request. Okay. At least one argument you have to mention.
Okay, and another important point is each views should return response HTTP response object with required response. Okay, तो वो देखो कुछ भी हम व्यूज बनाएंगे, कुछ भी फंक्शन बनाएंगे, तो वो क्या करेगा, एक HTTP रिस्पॉन्स उसको रिटर्न करने करना है। तो वो HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा या फाइल को रेंडर करेगा। वी विल लर्न रेंडर आल्सो in upcoming lectures. Okay, so remember this point, each view should return HTTP response object with required response, right? And one more thing, view, okay, you can say no, view can accept request as input and perform required operations and provide proper response to the end user. The views can accept request as input, okay, and perform required operations and provide the response to the end user. End user like हम ही तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, इस तरह से माई वेब करके वी प्रेस द एंटर। तो ये जो व्यू है ना, एक व्यू रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, जिसके थ्रू हम लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, राइट। देन एक्टिविटी 3, we will discuss about activity 3. Activity 3, we discussed about activity 2. Now we will discuss about activity 3. So what is the activity 3? Activity 3 means here we will write define URL data for our view in urls.py. तो जो भी हम व्यू बनाएंगे, सी हमने क्या व्यू बनाया, डेमो व्यू बनाया। तो हर एक व्यू के लिए हम हर एक यूआरएल बनाएंगे। यूआरएल कहाँ बनाते हैं हम, urls.py। urls.py में हमने यूआरएल बनाया माई वेब, और इसको कनेक्ट कर दिया व्यूज फाइल के अंदर डेमो फंक्शन से। तो व्यूज फाइल के अंदर डेमो फंक्शन, तो हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यूआरएल्स, यूआरएल क्रिएट करो और उसको कनेक्ट कर दिया, राइट। सो दिस इज द डिफाइंड यूआरएल पैटर्न फॉर our view in urls.py, right? This URL pattern will be used by end user to send request for our view, right? तो क्या होगा, जो हम URL पैटर्न बनाएंगे, तो URL पैटर्न बना रहे हैं, तो इसको यूज कौन कर रहे हैं, इस URL पैटर्न को एंड यूजर यूज कर रहे हैं। एंड यूजर विल टाइप हियर URL माई वेब, ओके। तो हु इज यूजिंग दिस URL, end user, okay। This URL pattern will be used by end user to send the request for our view, right? Now, okay, now we talk about urls urls.py, okay। So what is the meaning of this urls.py? You already know the meaning of this url.py। see, so url.py में हमने क्या कोड लिखा, हमने सिंपली सबसे पहले इंपोर्ट करा एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम टेस्ट ऐप। इंपोर्ट क्या करा है, व्यूज इंपोर्ट किया, क्योंकि व्यूज फाइल कहाँ अवेलेबल है, टेस्ट ऐप के अंदर, राइट। उसके बाद यूआरएल पैटर्न करके है, थोड़ा सा मैं कोड आपको दे दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, यूआरएल पैटर्न में यूआरएल बनाया। यूआरएल कैसे बनाया, इस तरह से, जो पहले से बने हुए हैं उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आएगी रिगार्डिंग। Let me take it on the page, right? Like this, we created a URL. Okay.
Now we talk about activity 4. Activity 4. Okay, just wait. Just taking a little time. This here I will write. Okay, activity 4 is start server. Send the request. Okay, how you will send the request, because you will get a URL whenever you will start the server. How you will start the server? Okay, so you will write here py manage.py run server. This is how you will start the server, and you will get this URL. Right? You will get this URL, and here you will write that whatever URL we created, what we created, my web. So here you will find the send the request to the my web. Okay, right? So like this it will work. Okay, so in brief, let me tell you once again, like what are the steps. I already told you the activities. Now see the steps. Another पेज. ओके, बस मैं एंड ही करने वाला हूँ इस लेक्चर को. ज्यादा अगर आप अभी तक इसको देख रहे हो, जैसे बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक देखेंगे इसको, लेकिन देख रहे हो तो वाकई में अच्छी बात है. ओके, डेफिनेटली यू वांट टू लर्न समथिंग.